I secured this payout by using one simple ICT strategy. Also, I secured 4 hour plus by pyramiding my position, and this is very important that I want to discuss in this video. And you can see my execution on EURUSD. Okay, on May 18th, I shared one quick weekly forecast on my free Discord group. You can go and check out this video, okay, and also you can join my free Discord. It's absolutely free. Link will be in description. Okay. In this video, in this weekly forecast, I discuss about DXY, EURUSD, GBPUSD, and other pairs that I was watching basically. Okay. This is a screenshot from that weekly forecast clip. Basically, you can see on DXY, I was bearish basically. Just for a short summary for you guys, okay, you can see that time basically when I said this weekly forecast on 4 hour time frame, you can see we have this nice accumulation, right? Nice consolidation. Then we manipulated higher, right? And now I was looking for distribution lower basically. So accumulation, manipulation, and distribution power of three model. Even if you go to DXY on the weekly time frame, you will see we were sitting at this weekly bearish parallel gap basically. Okay, so simply I was bullish on EURUSD. So if I am looking for bearish move on DXY, I'll be looking for long on EURUSD, GBPUSD basically. So if you see this weekly time frame on EURUSD, you can see we have this weekly internal to external level, right? And we're going to discuss this bullish candle that closed basically, okay? So simple strategy I use internal, external, okay? And I have covered internal, external in more depth in old videos, so you can go and check it out basically, okay? So let's come to the trading view and let's see the entry and let's see how you can add your position as well when market is moving in your favor basically. So now we are on trading view. Here you can see we are this weekly bullish value gap. So we're looking for market to move from this weekly internal to external. Okay. And for the time frame alignment, we use weekly time frame to H4 time frame for the entry basically. I personally like to do swing trading most of the time. So that's why I'm going to discuss a swing trading. And it's very simple. You can also apply this on any trading pair, any asset class. So as you can see, we was at this weekly bullish value gap. So we will go to the 4 hour time frame. Okay. So right now we are on 4 hour time frame. Okay, you can see, and here new candle is going to open. Okay, new week is going to open basically. But if you see on the 4 hour time frame, okay, remember what we discussed on the DXY, we had this accumulation, right? Then the manipulation was higher and we was looking for distribution lower on DXY, right? We discussed in starting. Same thing on opposite we have on EURUSD. You can see we have this nice tight range accumulation. We manipulated lower. Okay, where we manipulated? We manipulated towards key level weekly bullish value gap. Now we expecting price to trade higher to distribute higher basically. Okay, so that's the thought process when I was looking for trade basically. Now if you see here we have new candle is going to open new weekly candle, okay, but if you see we had this one good entry available here, okay. Also you have to understand basically market structure, okay. Here if you see when market was trading lower toward this weekly bullish value gap basically to this weekly bullish value gap, you can see we was creating this bearish value gap, right? You can see, let me show you, we was creating this 4 hour bearish value gap and market was respecting this 4 hour bearish value gap. Here you can see we have created this also 4 hour bearish value gap and market respected this bearish value gap. So again you can see we created this 4 hour bearish value gap, okay, but this time market expanded higher, okay, market expanded higher and created this bearish value gap, inverted fair value gap, right? So we know the 4 hour structure is shifting. Our weekly time frame is bullish and the 4 hour alignment is now also shifting bullish. Why? Because we know this bearish value gap is now getting disrespected and this bearish value gap is now going to act as a support basically. Okay. Because what is bearish value gap? In simple term, it is basically resistance और कुछ नहीं है, right? It's just resistance. Okay. अब सिंपल सी बात है, हम लोग ये चीज सब कुछ सीखें जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है, ओके, तो वो अब सपोर्ट का काम करता है या फिर कभी भी जब कोई सपोर्ट टूटता है तो अब रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट? इन सिंपल रिटेल कंसेप्ट वही चीज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में भी, ठीक है? सो वंस दिस कैंडल क्लोज्ड,
okay, above this bullish value gap, we know the H4 order flow is shifting bullish and weekly was also bullish. So now we are in alignment basically, right? And you can see we have created 4 hour bullish value gap as well. So this is our entry model basically. This can be your entry, right? When market tap this 4 hour bullish value gap. Personally, I missed this one and I did not want to hold the trade over weekend, so I didn't execute it here. Okay. So on Monday, basically when market open, new week candle open, I still know the market has enough range. Okay. Even if I miss this entry or I miss this for our bullish value gap entry, I don't cry basically because I understand from this weekly internal to this external, we have enough range and we have to capture one piece basically. Okay. हो सकता है कि ऑफ कोर्स मंडे को मार्केट ओपन हो और मार्केट कंटिन्यू एक्सपैंड करते जाए ऊपर ओके ऑफ कोर्स वी कैन मिस द ट्रेड एंड इट इज गोइंग टू हैपन बट आई नो the weekly time frame has enough range and I have to just capture one piece basically. Okay, so I was just waiting for the displacement higher. I was waiting for the second impulse. If you guys are from my Udemy course, you will know what is impulse one or impulse two, or even uh if you know Omar, okay, my mentor, he also talk about impulse one. Okay, so this was impulse two. Now I was waiting for impulse two basically. Okay, so first one, this was impulse one. Now I am waiting for impulse two with bullish value gap. So simply you can see, let me read this orange line. Simply you can see we have created this another 4 hour bullish value gap here, right? You can see this 4 hour bullish value gap. So this is my entry now. Also, you will see we have this red on the liquidity, right? Inside this 4 hour bullish value gap and then displays higher, okay, with market structure shift as well. Okay. So this is our simply silver bullet entry model, right? So we read the liquidity, okay, and then we displace higher. So this was my first entry on this 4 hour bullish parallel gap, okay. And one more thing you will see we have this nice equal high as a liquidity for the first drawn liquidity, okay. So this was my first entry. I added position here, okay. First entry was here, and as market moves in favor I was adding position more, okay. So now I was waiting for either 4 hour bullish engulfing or either again 4 hour bullish value gap displacement basically, okay. So I was waiting, nothing here for me, okay. Then I saw this 4 hour bullish value gap form, okay. This 4 hour bullish value gap form basically, new 4 hour bullish value gap form. And still you have to understand your range is still enough to कैपिटलाइज द मूव वंस यू अंडरस्टैंड कि ठीक है यहाँ से मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है वीकली इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव कर सकता है और लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी स्टिल यू कैन सी मार्केट अभी तक ये जो इक्वल हाई है अभी तक मार्केट ये लेवल टैप नहीं किया तो यू कैन ऐड पोजिशन ओके और ये चीज़ समझो कि जब तक अपने हायर टाइम फ्रेम में जब मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है अगर आप पोजिशन ऐड नहीं करोगे तो आप अच्छा कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे मूव को सिंपल में ठीक है. Of course, maybe you have entered here, okay, but you can see the another entry is forming. You know your drawn liquidity is still untapped, so why not you adding position? हो सकता है कि आप डरते हो कि हो सकता है कि मैं जैसे ही सेकंड पोजीशन यहाँ पे लेट से ऐड कर रहा हूँ हो सकता है मार्केट ऐसे हिट कर जाए ऑफ कोर्स वो करेगा ऐसा नहीं कि हर बार आपके फेवर में मूव करेगा बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दिस क्योंकि जब मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा तो आप अच्छा कैपिटलाइज कर पाओगे मूव बेसिकली ओके एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज योर रिस्क ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1% रिस्क लिया था ठीक है ये फर्स्ट एंट्री में 1% रिस्क लिया था और लेट्स आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था अब जब ये सेकेंड एंट्री आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो तो जो आप फर्स्ट एंट्री का एसएल यहाँ था उसको आप ट्रेल कर लो यहाँ पे बेसिकली राइट तो जो आप यहाँ पे 1% लूज करने वाले थे फर्स्ट एंट्री में हो सकता है जो सेकेंड एंट्री मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो जो फर्स्ट एंट्री था उसमें आप सिर्फ 0.5% रिस्क लूज करो और 0.5% का पोजीशन यहाँ पे ऐड कर दो तो अगर मार्केट टोटली यहाँ आता है फॉर एग्जांपल इस लो के नीचे आता है तो टोटल 1% ही लूज करो बट यहाँ पे क्या होगा कि आप 0.5% और पोजीशन अपना ऐड कर लियो अगर मार्केट यहाँ से फेवर में आपके मूव किया तो यू विल मेक मनी ओके दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज योर risk as well okay on next video or in some other video I'll discuss more about risk management so don't worry okay so here you can see we have created another 4 hour fair value gap okay this 4 hour bullish fair value gap we have created so now many of you will ask me कि कहाँ पे एंट्री लेना सही है इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में या फिर नीचे वाला 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में ओके एंड अगर आपने इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लिया तो इसमें क्यों नहीं लिया वो भी क्वेश्चन काफी लोग का आता है ठीक है फर्स्ट of course you can add position here as well okay but the reason I didn't
एडेड पोजीशन एट दिस 4 ऑफ वैल्यू गैप, अगर आप लेट्स यहाँ पे 4 ऑफ वैल्यू गैप में पोजीशन अपना ले रहे हो, ओके, एंड लेट्स अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैंडल लो के नीचे रख रहे हो फेयर वैल्यू गैप का, तो दिस इज नॉट, फॉर मी दिस इज नॉट अ गुड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। वाई? क्योंकि आई नो कि इसके जस्ट मेरे स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे एक 4 आवर वैल्यू गैप है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डीप रिट्रेस करे एंड ये 4 आवर बुलिश वैल्यू गैप फिल करके ट्रेड करे हायर, एंड आई डोंट वांट कि मार्केट मेरा एसएल हिट करके जस्ट रिवर्स कर जाए बिकॉज ऑफ माई बैड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। ओके, सो आई वांट टू पुट माई स्टॉप लॉस एट वैलिड पोजिशन, इवन इफ आई एम एंटरिंग हियर आई वुड लाइक टू पुट माई स्टॉप लॉस एटलीस्ट बिलो दिस लो। ओके, मतलब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये 4 ऑफ वैल्यू गैप टैप भी करे तो मेरे पास एक थोड़ा रूम रहे यहाँ से यहाँ स्टॉप लॉस के लिए, अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस करना होगा तो ये यहाँ से बाउंस कर पाए बेसिकली, ठीक है। सो एंड यहाँ से बेसिकली अगर मैं ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा हूँ, इट वाज नॉट ऑफरिंग मी एटलीस्ट 1:1 सो दैट्स व्हाई आई डिडंट एंटर। सो दैट्स व्हाई आई हैव प्लान कि अगर मार्केट ये 4 ऑफ वैल्यू गैप तक आता है तो आई विल लुक फॉर एंट्री एंड माई स्टॉप लॉस वाज समवेयर हियर बेसिकली। ओके, ये बॉडी के नीचे था, ठीक है, इसमें मेरे को 1:2 आर मिल रहा था। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट एडिट पोजीशन एट अपर फेयर वैल्यू गैप, एंड नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप में आई वाज वेटिंग बेसिकली। ओके, सो यू कैन सी मार्केट यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था। अब जो अभी हम लोग एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्कस किए, अगर आप इसको ये एरिया को 15 मिनट में जाके देखोगे तो आपको सेम चीज दिखेगा। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँ तो लेट मी डिलीट दिस क्विकली, एंड इसको हम लोग ऑरेंज कलर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पाओगे तो आप देखोगे कि 15 मिनट में सेम चीज है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्यूमुलेशन मार्केट किस साइड मैनिपुलेट कर रहा है, टुवर्ड्स योर H4 की लेवल, राइट। so it was accumulation manipulating lower and still the equal high liquidity is untapped, right? So that's why I added position here. Okay, so this was the manipulation, market tapped this level, okay, and then continue expanded basically higher. Okay, so this was something I capitalized basically when market was moving in favor. Okay, जब market favor में move कर था and this was basically previous day high जो था अपना, ठीक है। So here you can see we have created another 4 hour fair value gap. I first place the limit. Okay, मैंने यहाँ पे 4 आवर वैल्यू गैप में लिमिट भी अपना प्लेस किया था कि अगर मार्केट, क्योंकि अभी भी यू कैन सी जो अपना लिक्विडिटी है वो अनटैप था, राइट। तो मेरे को पता है कि मार्केट लेट से फिर से रिट्रेस करता है तो ये एक अच्छा एरिया होगा बाई करने के लिए। और जो मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिया था, ओके, और सेकेंड एंट्री यहाँ पे लिया था, दोनों का स्टॉप लॉस मैं ट्रेल करके इस लो के नीचे ले आता हूँ। अगर मार्केट अगेंस्ट भी जाए तो आई विल लूज ओनली 0.5%, अगर मार्केट मेरे फेवर में मूव करेगा तो आई विल मेक 3-4%। ओके, एंड मोर देन 6 आवर ट्रेड बेसिकली। ओके, बट जैसा ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ वो कंटिन्यू पहले किया एक्सपैंड करना हायर, देन कुछ टैरिफ का न्यूज आया, उसके बाद मार्केट रिट्रेस किया लोअर। इफ यू सी 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल, ओके, जब न्यू कैंडल ओपन हुआ तो ये पहले ऊपर ट्रेड कर रहा था, राइट। सो जब मार्केट एकदम मेरे क्लोज आ गया था टीपी के, तो आई डिलीटेड द लिमिट। किसको पता था कि अगले 5 मिनट के जस्ट बाद एक टैरिफ का न्यूज आएगा जिसके कारण मैनिपुलेशन होगा, मार्केट मेरा की लेवल हिट करेगा H4 में एंड फिर बाउंस बैक करेगा। सो आई डिलीटेड द लिमिट बेसिकली। ओके, but you can see how still you can see the drawn liquidity is still untapped, and then again market move higher and here market close basically, and that's why I have said the execution as well in the starting. So that's how you can do pyramiding and that's how you can capitalize the move basically. देखो, अगर एक या दो पेयर में आपको हायर टाइम फ्रेम समझ में आ रहा है, आपको जो एंट्री टाइम फ्रेम आपका है उसमें मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है, और अगर ड्रॉ लिक्विडिटी अनटैप है तो ट्राई टू ऐड पोजिशन। अब सिंपल सा बात ये सोचो, अगर मैं, ऑफ कोर्स आई मॉनिटर सो मेनी पेयर, ओके, बट मेरे को पता है यूरो एसडी वीकली बुलिस है, 4 आवर बुलिस है, 4 आवर मेरे फेवर में मूव कर रहा है, तो वाई आई विल बी लुकिंग फॉर ट्रेड ऑन अनदर पेयर जब मैं इस पेयर में मेरे को हायर टाइम फ्रेम वीकली फ्लो DXY का बायस H4 एंट्री सब कुछ अलाइन हो रहा है, तो वाई आई शुड नॉट ऐड पोजिशन इन दिस बेसिकली। ओके, ट्राई टू डू पिरामिड, ट्राई टू ऐड पोजिशन and be comfortable with it. Okay, that's how you will make more reward basically, that's how you will gain more money basically as well. Okay, so I hope you guys like this video and make sure to join the free Discord. I'll be sharing the market analysis there as well. So yeah, see you guys on the next video. Take care.